I'll start with a small question. If you all can try to answer that. Hare Krishna. So the question is कि if we want to love someone and if we like someone and in that love if we want to please that person, अगर हमें उन जन को प्रसन्न करना है, then what do you do? If you love someone and if you want to please that person, then what is the thing that you will do, that you will bring into action? Anyone who wants to share, you can think and then share. Mataji, can you ask again, Hare Krishna? प्रभु जी, अब तो मुझे और डर लग रहा है. I was asking that if you love someone, if you like someone, and if you want to please that person, then what will you do in order to please that personality? It can be whoever, whatever. वृंदा दीदी, रोहिणी माता जी सिंह, जो वो चाहता है वो करना, मतलब जो वो चाहते हो उसको करना. Yes, thank you. Bua is also here. Oh my God. 2x more I am fearing now. Yes, Harisharan Prabhuji, you were saying something. Mataji, it is by pleasing them, by giving them whatever they want. Yes, whatever they want. Just like Bua also said that whatever they are expecting, whatever they are wanting, we give that. Yes, thank you. Yes, Nipun Prabhuji. माताजी, उन्हीं से पूछ लेंगे कि आपकी फेवरेट क्या है, या फिर उनके जो क्लोज हैं उनसे पूछ लेंगे उनका फेवरेट क्या है, मतलब Yes. उनको क्या पसंद है. Yes. Lalita Mataji, you were saying something? Yes, Hare Krishna. I was just saying that to rendering service to them by knowing their mood. And could you please also turn on this chat box? Okay. Yes, actually, nowadays little bit more precaution we take. So Yes, thank you. thank you. सो यस, आप सबने सेम आंसर दिया कि जो उनको पसंद है, व्हाट दे वांट, व्हाट दे डिजायर, व्हाट दे एक्सपेक्ट, वी विल ट्राई टू डू दैट एंड दैट ओनली कैन फुलफिल देम इवन इफ वी वांट टू सर्व देम. महाराज मेनी टाइम सेज कि अगर किसी का गला खराब है और अगर वो आपसे काढ़ा मांग रहा है पर आप उसको ठंडा ठंडा पानी लाके दे दो, चाहे वो ज्येष्ठ मास भी है, तो भी इट विल नॉट बी सर्विस, इट विल बी मनमानी. तो वो जो चाहते हैं, वो जो एक्सपेक्ट करते हैं, अगर हम उनको वो दे, देन दैट विल प्लीज देम, राइट? सो वी ऑल want to become dear to Krishna. We all want to become Krishna's favorite devotee, but we don't know what he wants, what he expects from that devotee. What qualities can we imbibe in our character that we can become dear to him? So therefore, Maharaji kindly instructed that we all together discuss about what those qualities are that we can imbibe in our character so that we can become Krishna's favorite devotees. Yes. And Krishna himself tells कि एक डिवोटी में ऐसी कौन सी क्वालिटीज हैं जो वो एक्सपेक्ट करते हैं, एंड ऐसी क्वालिटीज अगर हम अपने चरित्र में उतारेंगे देन दैट विल प्लीज कृष्णा. So this is the discussion from Bhagavad Gita, 12th chapter. Krishna says, after each and every verse, starting from Bhagavad Gita 12.13, you can open your Bhagavad Gitas if you have it by your side. After every shloka, Krishna says, Yo mad bhakta same priyaha. This kind of devotee I like very much. This kind of devotee is very dear to me. So even Prabhupada says, I was hearing one lecture today. So Prabhupada was telling that this Krishna consciousness, this movement means how can we become more dear to Krishna? And if we become dear to Krishna, that means becoming dear to his pure devotees, becoming dear to his representatives, Hari, Guru, Vaishnavas. So if we try to become dear to Krishna, we will automatically become dear to the devotees. And if we try to become dear to the devotees, we will automatically become dear to Krishna. Yes.
So this is one instruction of Krishna's dear devotee, that we all try to discuss and implement these qualities. So certainly the devotee will also be pleased and Krishna will also be pleased. So Prabhupada was telling that how will Krishna love me more? This should be our contemplation. What can I do that Krishna will love me more? And Krishna says in the Bhagavad Gita, Soham sarva bhuteshu na me dvesho asti na priyaha. So he says that he is neutral. उनके ना कोई एनिमी है, ना कोई फ्रेंड, ना कोई प्रिय है, ना कोई वो किसी से द्वेष करते. And this is general principle. He is equal to everyone. But in the next line he says, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्. That पर अगर कोई कृष्ण का भजन करता है, then there is special significance. पर at the same time हमें ये नहीं समझना चाहिए that Krishna is partial. No, this is a natural instinct. Just like a father, अगर उनके कोई obedient son है, that father will generously love that obedient son more because he is faithful. So this, it's not that he is partial. It's a natural instinct. And ये instinct हमारे अंदर भगवान से ही तो आया है. क्योंकि भगवान favors those devotees who render faithful service. So he favors those devotees, and this is natural instinct which a father also has. We all have in ourselves. This is coming from Krishna only. Yes. So we are in this movement of Krishna consciousness. We are in this movement in which the whole point we are actually here, the whole point that we are trying to do devotional service, the whole goal of our life is just how we can please Krishna, how we can please Guru. And this will be the success of our limited temporary lives. So इसलिए हम लोग आज से जब भी वेडनेसडे को क्लास होगा, लिविंग दिस वीक, हम लोग ट्राई करेंगे डिस्कस करने के लिए कि वो कौन सी क्वालिटीज हैं जो हम अपने कैरेक्टर में इम्बाइब कर सकते हैं. Yes. So I was hearing one lecture in which Mataji was telling that there is a triangle love story in every movie. This person loves this person and the other person loves. So we are trying to love Krishna. But Krishna says that he loves a person who has these qualities. One who is a pure devotee. One who renders faithful devotional service to him. So we are trying to love Krishna, but Krishna loves his pure devotees. So therefore we should try कि कैसे हम भगवान के एक प्योर डिवोटी बन सकते हैं, कैसे हम ये क्वालिटीज अपने चरित्र में उतार सकते हैं, है ना. हाउ कैन वी बिकम a dear devotee, a pure devotee of Krishna, because Krishna loves his dear devotees, and if we want to love Krishna, then we should try to become a dear devotee of Krishna. Devotee बनना easy होता है, but now we have to endeavor to try to become Krishna's favorite devotee. So therefore, in Bhagavad Gita chapter 12, Krishna tells around 36 qualities. 36, so it's a big number, 36, and each quality is very lofty and lengthy to be able to go deep in them. But slowly and steadily, we try to understand each and every quality and try to introspect कि अभी हम कहाँ पे stand करते हैं and कैसे हम उन qualities को अपने अंदर imbibe कर सकते हैं. Then surely, यो मद भक्ता समे प्रियः, we can become dear to Krishna. Just like we recite Shikshashtakam, Guruva Ashtakam, this is called Bhakta Ashtakam. क्योंकि ये 8 verses, it's spanning over 8 verses in which Krishna is telling 36 qualities over 8 verses. Therefore, it's called Bhakta Ashtakam. Yes. So as we go, each and every quality we'll discuss one by one. You can make a checkbox. कोई भी क्वालिटी इन 4 phases के थ्रू एक डिवोटी के अंदर मैनिफेस्ट होती है. सो यू कैन राइट 4 points एंड यू कैन मेक अ चेक बॉक्स ईच एंड एवरी क्वालिटी वो किस स्तर पर है हमारे अंदर अभी, और कहाँ से हमें अभी कितना अपने आप के ऊपर वर्क करना है. सो फर्स्ट पॉइंट इज that some qualities are there in us in ichha roop, that we like them, we hear them, we want to have them, but we think they are far-fetched reality.
तो हम डिजायर तो करते हैं, हम अप्रिशिएट तो करते हैं उन क्वालिटीज को, बट ऐसा लगता है कि अभी तो बहुत दूर है, अभी मैं नहीं अपने अंदर उतार सकता अपने जीवन में, अभी बहुत लॉफ्टी है, इट्स नॉट वेरी प्रैक्टिकल फॉर मी टू एम्बाइब। सो जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है, क्लास अच्छा तो लगता है, और जैसे ही क्लास खत्म हो जाती है, यू थैंक गॉड कि इसका चप्पड़ चप्पड़ बंद हुआ अब। So this is इच्छा रूप, that you have the desire but you're not practicing. But the second stage is अभ्यास रूप, that you're actually working कि ये क्वालिटी मेरे अंदर आ जाए. How can I become a more deeper devotee? That I can have more depth in my consciousness, in my heart. And as you actually, जब मैं खुद पढ़ रही थी इन क्वालिटीज को, तो ऐसा लग रहा था कि एक्चुअली जैसे आई वॉज आस्किंग दिस क्वेश्चन कल इन द Q&A ऑल्सो टू महाराज, तो महाराज वॉज टेलिंग कि जिन डिवोटीज के अंदर ये क्वालिटीज आ जाती है, तो भगवान कहते हैं कि वो मुझे प्रिय है, बट जो इन क्वालिटीज को अपने चरित्र में उतारना चाहता है, भगवान कहते हैं वो मेरे को बहुत 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 प्रिय है। बट ऐसा क्यों? महाराज बताते हैं कि ये भगवान का भक्त वत्सलता है, कि जो रो रो के भगवान को प्रार्थना करता है कि कैसे मेरे अंदर ये क्वालिटीज आ जाए, मैं रियली में भगवान का प्रिय बनना चाहता हूँ, तो उनको तो भगवान बहुत प्रेम करते हैं। और जब एक बार आ जाती है तो प्रेम करते हैं, पर उतना नहीं जिनको जो साधक स्तर पर होता है, because he's trying, he's crying, he's praying. So as I was reading these qualities, ऐसा लग रहा था कि अगर एक एक्चुअली में एक डिवोटी के अंदर ये क्वालिटीज होती है, because he is so deep in his devotion, जैसे महाराज हमेशा बताते हैं कि if we are practicing Krishna consciousness, then all these qualities will run behind that person. It's not that the person will have to run behind these qualities. The qualities will run behind that person, that please accept me. Huh? This is the power of bhakti, the power of devotion, that the qualities will run after you. So we have to understand these qualities जो एक devotee के अंदर होती हैं, but only through sincere devotion we can attract these qualities inside of us. And जैसे आप qualities पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा really में एक devotee is so glorious. Actually, devotees are so glorious. When we see people who are rotting in the material world, and when we see the heart of devotees, it seems that devotees are so glorious that they have so many divine qualities inside of them, right? So okay, now we were at Abhyas Roop, that you're actually trying to work on it and you're trying to train yourself in those qualities. Then the third thing is Siddha Roop. Siddha Roop means कि favorable situations में तो आप उन qualities को imbibe कर पा रहे हो, but unfavorable situations में you go a little this way or that way. मतलब कि you are forgiving generally in all situations, most situations, but when someone comes to your wrong side, then you show your bad side too. You show your Narsingha Roop also. So, in favorable situations, you're able to demonstrate them. But when unfavorable situations come, then you become a little this way and that way. So this is Siddha Roop, and the last one is Sthira Roop. That no matter what situation comes, you always exhibit those qualities. A vague example is कि being ISKCON devotees, we will never eat meat. We will never go that low in any situation. चाहे कुछ भी हो जाए. Same with the qualities. कि चाहे कुछ भी हो जाए, we will never because it is part of us. It is the nature of our heart. This is the depth of our, हमारा heart का nature, quality of our heart इतना अच्छा हो गया है कि चाहे कोई भी परिस्थिति है, हमारा heart ही ऐसा है, हमारा heart ही ऐसा है, तो चाहे कुछ भी हमारे सामने आए, we'll always be in that consciousness. We'll always exhibit that quality. So these are the four: Ichha, Abhyas, Siddha and Sthira. So we have to now make sure each and every quality as we go through, हमें एक introspection करनी है कि where do we stand, in which category do we stand, and how much we need to progress in order to imbibe that particular quality in our character. ठीक है. So
We love Krishna, and Krishna says that he loves those who have these qualities. So we must be very sincere and serious कि हम इन qualities को अपनी life में उतार पाए. And at the end, as we always hear, choice is always ours. Choice is always yours. If you want to become a person of virtue and character that the whole world will appreciate, or if you want to be a person of low character just for the fame and name of few people, or we want to become dear to Krishna, then we can become actually dear to everyone. So the choice at the end will always and always be ours only. So before jumping on to the first quality, I was hearing that when we meet someone, ye 4 stages we have to pass through. Even for a devotee, when we come into Krishna consciousness, these are the 4 stages we usually go through. First stage is attraction. We have attraction for Krishna consciousness. That I like to go to the temple and I like to be in the association of devotees, but I also like to go to the shopping mall. I also like to watch movies. So I have attraction for Krishna consciousness, but I like other things also. Then there is a stage of affection that I want to render some service and I'm liking the process. So this is affection. As we nourish ourselves, as we hear more lectures, read Prabhupada books, we chant sincerely, so we build more affection. Then when we all get more nourishment and when we get more fixed up in the process, then we get to a stage of attachment. Attachment means that we're attached to the process. If I'm in the association of devotees, I can give up anything else to be there. I can give up any other desire to be in that association of devotees, to be, to hear lecture, to chant the holy name, to render service, to be in the temple. I can give up anything else. Attachment. And then there is a stage of absorption. That means complete surrender. That means it's not just changing dress from pant shirt to dhoti kurta and wearing tilak kanthi, but actually there is a transformation of the heart. So transformation of the heart means that you actually want to love and surrender to Krishna. You want to become as Krishna wants you to become. You want to think as Krishna wants. You want to speak as Krishna wants. You want to do everything surrounding Krishna. You want to keep Krishna in the center of your life. You want to keep Guru in the center of your life. So this is when you're surrendered to the process. है ना? So, therefore, the first quality which Krishna describes in the Bhagavad Gita, I'll share my screen so we can read the verse. So, this is अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रा करुण एव च निर्ममो निरहङ्कार समा दुःखा सुखः क्षमी संतुष्टा सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चया मयि अर्पिता मनो बुद्धिर् यो मद्भक्ता स मे प्रियः. Yes. Sanya Didi, can you read the synonyms for us? Sure. Advesht, it means non-envious. Sarva Bhutanam, it means towards all the living entities. Maitrai, that means friendly. Karuna, that is kindly. Eva, आप थोड़ा सा जूम आउट कर सकते हो कि सारा एक साथ दिखे या फिर ये this अच्छा सॉरी ओके is- एव एक सेकेंड. हाँ. नहीं इट इज फाइन Eva, it means certainly. Cha means also. Nirmamah, that means with no sense of proprietorship. Nirahankara, that means without false ego. Sama, that is equal. Dukha, that is in distress. Sukha, that is unhappiness. Shami, that is forgiving. Santushta, that is satisfied. Satatam, that is always. Yogi, that is one engaged in devotion. Yet Yatatma, that is self-controlled. Dridhanishchaya, that is with determination. Mai, that is upon me. Arpita, that is engaged. Mana, that is mind.
Buddhi, that is and intelligence. Ya, that is one who. Mad Bhakta, that is my devotee. Sa, that is he. Me, to me. And Priya means dear. Yes, thank you so much. Lalita Mataji, translation. Yes. One who is not envious, but is a kind friend to all living entities, who does not think himself a proprietor and is free from false ego, who is equal in both happiness and distress, who is tolerant, always satisfied, self controlled, and engaged in devotional service with determination, his mind and an intelligence fixed on me. Such a devotee of mine is very dear to me. Yes, thank you. Kanupriya is there? No. Shachi, are you there? Anji. Anji, can you read the purport for us? बैकग्राउंड से नॉइज आएगी. कोई बात नहीं, हमें सुनाई दे रहा है. ओके ओके. Vrinda, which verse is this? 12th chapter का कौन सा? 12.13-14. Okay. Coming again to the point of pure devotional service, the Lord is describing the transcendental qualifications of a pure devotee in these two verses. A pure devotee is never disturbed in any circumstances, nor is he envious of anyone, nor does a devotee become his enemy's enemy. He thinks this person is acting as my enemy due to my own past misdeeds. So it is better to suffer than to protest. In the Srimad Bhagavatam 10.14.8, it is stated that tat te nukampam samikshmano munjana evatma kritam vipakam. Whenever a devotee is in distress or has fallen into difficulty, he thinks that it is Lord's mercy upon him. He thinks, thanks to my past misdeeds, I should suffer far. Suffer far greater than I am suffering now. So it is by the mercy of Supreme Lord that I am not getting all the punishment I am due. I am just getting a little by the mercy of Supreme Personality of Godhead. Therefore, he is always calm, quiet, and patient despite many distressful conditions. A devotee is always kind to everyone, even to his enemy. Nirmama means that a devotee does not attach much importance to the pain and trouble pertaining to the body because he knows perfectly well that he is not the material body. He does not identify with the body. Therefore, he is freed from the conception of false ego and equipoised in happiness and distress. He is tolerant and he is satisfied with whatever comes by the grace of Supreme Lord. He does not endeavor much to achieve something with great difficulty. Therefore, he is always joyful. He is a completely perfect mystic because he is fixed in the instructions received from the spiritual master, and because his senses are controlled, he is determined. He is not swayed by false arguments because no one can lead him from the fixed determination of devotional service. He is fully conscious that Krishna is the eternal Lord, so no one can disturb him. All these qualifications enable him to fix his mind and intelligence entirely on the Supreme Lord. Such a standard devotional service is undoubtedly very rare, but a devotee becomes situated in this stage by following the regulative principles of devotional service. Furthermore, the Lord says that such a devotee is very dear to him,
for the Lord is always pleased with all his activities in full Krishna consciousness. Yes, thank you so much, Shachi. So, Prabhupada is saying that such a standard of devotional service is undoubtedly rare. पढ़ते पढ़ते कभी कभार ऐसा लग रहा होगा भाई दिस इज सो लॉफ्टी, मेरे से तो नहीं हो पाएगा, इतना सब एक क्वालिटी तक अपने अंदर अच्छे से नहीं है, इतने अनर्थ है तो क्या सारी क्वालिटीज आएंगी. बट what is Prabhupada again saying that but a devotee becomes situated in that stage by following the regulative principles of devotional service. This is the glory of Bhakti Yoga. आपको अलग से प्रयास नहीं करना है कि क्वालिटी अपने अंदर इम्बाइब करने का. If we together sincerely try to progress in Krishna consciousness, अपने आप ये क्वालिटीज एक डिवोटी के अंदर आ जाएंगी. प्लस हमें ये समझना चाहिए कि ये लॉफ्टी है, बट जब जब लॉफ्टी लगे तो सोचना चाहिए यो मत भक्ता समे प्रियः. If we want to become dear to Krishna, then we have to try to get out little from our comfort zone ताकि हम ये qualities अपने अंदर imbibe कर पाए. And then Prabhupada is also saying that the Lord says that such a devotee is very dear to him, for the Lord is always pleased with all of his activities in full Krishna consciousness. So if we take one step, Krishna will take 1,000 steps towards us. ही इज ऑलवेज इंडेटेड टू अस. एक वो तो हमेशा वेट ही कर रहे हैं हम उनकी तरफ कब मुड़े, और मुड़ जाते हैं तो ही नेवर लीव्स दैट डिवोटी, ही बिकम्स इंडेटेड टू दैट डिवोटी. यस. सो टुडे विल डिस्कस द फर्स्ट क्वालिटी विच इज अद्वेष्टा. अद्वेष्टा मीन्स non enviousness. So Krishna likes a devotee who is not envious. So who among us is non envious? Oops, difficult. No hand goes up. Because the reason of our being in this material world is envy. मतलब this is the height that we are envious towards Krishna only. जिनके प्रिय बनना है उनसे ही द्वेष करके बैठ गए हैं, और इसलिए स्टैंप लग गया है कि अभी जेल में है, इस मटेरियल वर्ल्ड के दुर्ग में है, ड्यू टू दिस एनवी टुवर्ड फ्रॉम द सुप्रीम लॉर्ड ओनली. That I can be the भोक्ता, I can be the proprietor, I can be the enjoyer. इस एनवी की वजह से हम उनसे उनसे ही द्वेष करके बैठे हैं. हरे कृष्णा शची. सो यस. सो अब आप सब मुझे बता सकते हैं what according to you is envy? And how do you think that is envy there in our life, in our practical dealings? Do we feel this, that we have envy inside of us? And what is envy? Yes, Sanya Didi. It's basically just keep comparing and we are envious, we are jealous कि कोई हमसे आगे बढ़ रहा है. Yes, तो आपको ये फील होता है आपके हार्ट में ऐसा है? बहुत साइड. आपके नहीं, हम सबकी कंडीशन ऐसी है, आपकी नहीं. और आपसे कई गुना ज्यादा जो मैं ये बोल रही हूँ मेरी है, इसलिए महाराज ने मुझे दे तू कर, क्योंकि तेरे अंदर सबसे ज्यादा ही है ये. तो कुछ समझ में आएगा मुझे करना. यस, आरव प्रभु जी. I think not being happy for the growth of others. यस. और हाँ, मेरे अंदर बहुत ज्यादा भर भर के है. एनीवन एल्स? शची, कुछ तो बोलो. कुछ भी. हाँ, आवाज नहीं आ रही. चलो, you set the mic, then you tell me whenever you are ready, then we'll hear from you also. So we have to first understand कि जो ये envy है जो हमें अपने सबके हार्ट में फील होता है कि है, ये आती कहाँ से है? When we know the root cause, that where this envy is coming from, then maybe we can work upon it
in order to cut this from its root. So, this envy is coming from lack of knowledge. As Prabhupada is saying in the purport, कि we don't realize कि हमारे ही प्रारब्ध है, हमारे ही कर्मा है, बट एक फॉल्स आइडेंटिफिकेशन हमने अपने अंदर बना लिया है. मिथ्या, I don't know that Sanskrit word, but anyways, wrong मिथ्या assumption. अहंकार. मिथ्या अहंकार था और एक और मिथ्या था. अजम्पशन को हिंदी में था, वो क्या बोलते हैं मैं भूल गई. बट एनीवेज इट इज रॉन्ग असम्पशंस. रॉन्ग असम्पशंस जब हम सोच लेते हैं, दिस इज द रूट कॉज ऑफ एनवी. lack of knowledge, because we are not reading the scriptures, we are not understanding, we don't know that whatever मेरी लाइफ में जो हो रहा है, it is my own karma, it is my own fault. But what do? We tend to then blame people outside कि इस परिस्थिति की वजह से मैं सफर कर रही हूँ, हाँ, इस जने की वजह से मैं सफर कर रही हूँ, उसको क्योंकि ज्यादा मिलता है तो मुझे कम क्यों मिलता है. पहला, उसको ज्यादा मिलता है इसलिए मेरे को सफर होता है. क्यों उसको ज्यादा मिलता है, हाँ, क्यों? वाई डज दैट, आई एम ऑल्सो डूइंग सो मच, वाई इज दैट पर्सन ओनली गेटिंग मोर, इवन इफ इट इज रेप्यूटेशन और इट इज रिसोर्सेज. Why that person is, I should also get, I should also be acknowledged, and this is the cause of my suffering. Now, assuming that this is the cause of my suffering is the lack of knowledge, because we don't know that we are only the reason for ourselves to suffer. Because of our own prarabdha, our own karmas, is that these sufferings, these situations are in our life. So we are not convinced about this, and therefore we get angry, we get envious, we blame people, we blame situations. So this is lack of knowledge, that this person is creating a problem in my life. Because of this person I am suffering, and if, for example, if he would not have come late, then everything would have gone fine. Huh? Or if this leader would have taken his job properly, then maybe camp would have gone better. No? Anything, X, Y, Z, anything. So we are not convinced that everything is predestined. We are not convinced that everything is happening as per karma. Or sometimes we think that if I would have got that much resources like that devotee, I would have also made progress in my Krishna consciousness like that devotee. Or if I would have got this talent or this anything, then maybe I would also have got recognition in XYZ person's eyes. And anything. So we are not convinced that it is predestined. We're not convinced everything is happening as per our karma. We're not convinced that whatever happens in our life happens by three causes. Now, what these three causes are, first is the immediate cause. जो immediately हमें ऐसा लगता है कि इस जन की वजह से या इस परिस्थिति की वजह से हुआ है, this is the immediate cause due to that particular event. Second is the real cause. Real cause means कि हमारे खुद के प्रारब्ध, our previous karma is leading to that, है ना. It is, जैसे महाराज बताते हैं, ब्लूप्रिंट निकल चुका है ना. यश, अपयश, हैप्पीनेस, डिस्ट्रेस, ये सब ब्लूप्रिंट ऑलरेडी निकल चुका है, वही हम लोग सफर कर रहे हैं. थर्ड थिंग इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, nothing happens without the will of Krishna. And whatever situation he has arranged in your life is for you to grow. Just as a plant blooms wherever it is potted. It does not think कि मुझे अहमदाबाद में क्यों पॉट कर दिया, मुझे तो दिल्ली में पॉट करना चाहिए था, वहां पे ज्यादा अच्छे से मैं ग्रो कर पाता. नहीं, a pot will grow wherever it is potted, है ना. So wherever we are potted, Krishna is the ultimate controller, but he is our ever well-wishing best friend. He is our ultimate controller. Everything he has arranged as per our prarabdha through the material nature, but he is our ever well-wishing best friend. He knows what is best for us. That उस circumstance में वो कैसे grow कर सकती है, उस circumstance से ही वो qualities कैसे heart में imbibe हो सकती है ना. Sometimes we reflect back, बहुत
सालों बाद समटाइम्स रिफ्लेक्ट बैक, उस परिस्थिति में तो ऐसा लगता है क्यों इतना प्रॉब्लम आ रहा है, बट सालों बाद व्हेन वी रिफ्लेक्ट बैक तो ऐसा लगता है अगर वो नहीं होता तो शायद मैं आज भक्ति में प्रोग्रेस ही नहीं कर पाती, है ना। ललिता माता जी कैन शेयर व्हाट एक्सपीरियंसेस शी हैव, है ना। सो मच कृष्णा टेस्ट्स, सो मच, स्टिल शी इज ऑलवेज फर्म इन द डिवोशन, है ना। देन समटाइम्स शी वुड ऑल्सो थिंक बैक एंड से कि अगर वो नहीं होता शायद इतना डिटर्मिनेशन ही कभी आ ही नहीं पाता है भक्ति में, है ना। वो क्वालिटीज सोच भी नहीं पाती कि अच्छा कुछ क्वालिटीज इम्बाइब करना है ना, और क्वालिटीज भी नहीं आ पाता अगर वो सिचुएशन नहीं होता तो। Yes. So if we know that these three causes and reasons are attached to everything that is happening in our life, then we won't have envy towards anyone. किसी को हम ब्लेम ही नहीं करेंगे, किसी के प्रति द्वेष ही नहीं होगा, क्योंकि पता है खुद का वजह से ही हुआ है वो, तो दूसरे को ब्लेम करने का क्वेश्चन ही नहीं उठता। यस माता जी। Yes, I don't know how far I'll be sounding it right, but I have just one thing to share on this regard, that I was reading it yesterday, that even this enviousness is coming from Radharani, no? Even she says in that shloka in Bhagavatam, she says to gopis, she's telling to all the gopis, Gopya kimacharadam kushalam smavenur damodaradhara sudham api gopikanam. So she's saying to the gopis that, oh, what this Venu has done, that is getting the fortune of getting touched by the lotus lips of Krishna. So eventually this shloka in entire Bhagavatam is filled with enviousness, though it's a spiritual enviousness, it's transcendental enviousness, but at the same point, it's also in us. We can't, as personally, I think we can't just stop it. We can't stop our enviousness. But what I would like you to instruct or talk about is that how can we dovetail it? Yes, how this material enviousness, and what's the line of difference where we can understand that actually is it condensing us or is it actually making us progress? Because ultimately we can't stop enviousness. Yes, so thank you. Thank you so much. Once I asked this question to Maharaj also, that sometimes I feel that this enviousness has taken over me, so much competitive spirit I feel that it's difficult for me to um actually get inspired from the process, actually appreciate the process, because so much enviousness, so much competitive mentality has taken over me. So at that time Maharaj also said that yes, this competitive mentality, that I want to be in the limelight, I want to get appreciation, this when this enviousness is coming from the false ego, due to the I mentality that I want to be recognized, then this is material. Then Maharaj says that this should be converted to knowing that we are Krishna's and for Krishna, just like Radharani and Chandravali. They also had competition, but not that I, not due to the false ego, but how can I serve Krishna better? How can I please Krishna better? है ना? If she is doing so much, it's very nice. I don't want that she goes down. She does not do that. No. How can I also serve Krishna? So this is spiritual competition, wherein we are not envying the other person, that uh, it's not a material emotion. It's a spiritual emotion, how we can serve Krishna better, because we know that we are Krishna's and for Krishna, and we want to serve Krishna. The other person is also Krishna's part and parcel for Krishna. It's constitutional. We will encourage that. चलो आप भी करो, मैं भी करती हूँ, बट इधर क्या होता है, बस मैं ही करूँ ताकि मुझे अप्रिसिएशन मिले, आप मत करो, आप पीछे जाओ, मैं आगे जाऊं. So this is material. But spiritual is ki, I'll inspire you also do. I'll also do. And if you'll do that much, so I'll also try to do that much. So that I can also please Krishna. Because this is एक मिथ्या अहंकार से आता है, एक सत्य अहंकार से आता है. So maybe I'm limited. आप बताओ आगे, whatever what you read yesterday, if you want to share something from that also.
No, you explained it nicely. So yes, continue, please. Okay. So I was telling that this underlying cause of enviousness, whenever we feel that we are envious, we should think that we are not connected to Krishna just now. And the whole problem arises when we are not connected to Krishna. When we वो cord जब lose हो जाती है, then we feel envious. And if we remain connected to Krishna, we will not be envious of anyone. जैसे इसमें एक बहुत ही सिली एग्जाम्पल से समझाती हूँ, ट्राई करती हूँ। जैसे हमने पानी को गैस पे रखा है बॉईल होने के लिए। अब अगर सानिया दीदी फॉर एग्जाम्पल पानी को बॉईल कर रही हैं और मैं किचन के अंदर आ गई, हाँ, तो मैं पूछ रही हूँ कि पानी क्यों बॉईल हो रहा है, तो वो कहेंगे कि क्योंकि आप किचन में आए हो इसलिए हो रहा है, या फिर क्योंकि ट्यूबलाइट जल रही है इसलिए हो रहा है। हाँ, तो दिस विल नॉट बी द रीजन, बट द रीजन इज व्हाट, दैट द पानी इज ऑन द स्टोव, एज सिंपल एज दैट, है ना। सिमिलरली वी आर blaming others, we are blaming the situations and but the reason is not that. Externally अब ऐसा लगेगा कि वो रीजन है, बट एक्चुअली वो रीजन नहीं है हमारा एनवियस होने का दूसरे जन से या किसी सर्कमस्टेंस से। द रीजन इज दैट वी आर नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। If we are connected to Krishna, then in that situation we'll be grateful, will not be envious, or will not be ungrateful. We'll always be grateful in that situation. Because if we're connected to Krishna, then anything external will not matter to us. We'll always be connected. Just say if someone is wearing, just say Harisharan Prabhu is wearing the earplugs. Now, if the mother will come and say anything, he'll be like, आपने कुछ बोला? क्योंकि I was hearing. So anything external will not affect us because we're then connected with Krishna. Just as a cashier, वो पैसे गिनने में इतना ज्यादा ही इज एंगेज्ड, अगर कोई कुछ बोल के भी चले जाएगा उसको पता ही नहीं लगेगा कि अच्छा तुम कुछ बोल के गए, मेरा ध्यान क्योंकि पूरा वहां पे था। तो अगर कुछ भी फिर हमारी लाइफ में होगा, विल नॉट बी वेरी मच अफेक्टेड बिकॉज अवर माइंड इज देयर कनेक्टेड विद कृष्णा ऑलवेज, है ना। सो always this happens that whatever it is our internal will affect the external. जो अंदर है वो बाहर, for example if you squeeze a mango, mango juice will come out. If you squeeze an apple, apple juice will come out. It's not कि mango को squeeze करा तो apple juice आ गया और apple को squeeze किया तो mango juice आ गया, क्योंकि जो अंदर है वही बाहर आएगा ना। mango के अंदर उसका ही juice है तो दबाओगे वही बाहर आएगा। Similarly when situations test us, जो हमारे अंदर है, that is the way we will respond to that particular situations. For example, this is also, I don't know if it will make sense, but if someone scolded, if a boss scolded the employee in the office, so the person will come home and pour out all the gussa on the wife. क्या सब्जी बनाई है आज, नमक कम, चाहे वो सब्जी कल भी ऐसा ही सेम टेस्ट है, आज सब्जी नमक कम है, क्यों गंदा सब्जी, ये घर कितना गंदा है, ये भी नहीं करते वो भी नहीं करते। क्योंकि द रीजन इज नॉट कि घर गंदा है या सब्जी गंदी बनी है, द रीजन इज कि बॉस ने डांटा था। जैसा इंटरनल है वैसा एक्सटर्नल होगा। दूसरी ओर इफ ही हैड अ रेज इन द सैलरी, देन हिल बी सो हैप्पी कि बच्चा भी आइडेंटिफाई करेगा आज पापा खुश है, आज मैं फोन का रिचार्ज करवा लेता हूँ। सो पापा कहेंगे 200 का रिचार्ज क्यों, जियो का ऑफर है, यू गेट अ 500 रिचार्ज डन। So because the internal is like that, so he'll demonstrate that as the external only. So your inside affects how you are at the outside. So if we are connected with Krishna always internally, that is how we'll respond to every situation. So our inside will always affect our outside, our dealings, our seeing. हर परिस्थिति ऐसा लगेगा दूसरा चश्मा लग गया हर परिस्थिति को देखने का। दिस इज हाउ वी कैन गो डीप इन आवर ओन कॉन्शियसनेस, इन आवर ओन हार्ट, इफ वी ट्राई टू इम्बाइब। एंड वो एक्सपीरियंसेस बहुत बहुत नरिशिंग एक्सपीरियंस होता है, वो बहुत नरिशिंग। यू एक्चुअली गेट इनर फुलफिलमेंट एंड हैप्पीनेस इन दैट एक्सपीरियंस। यस। सो नाउ देर इज अ क्वेश्चन कि अब कृष्णा से कनेक्ट होना तो है, बट कैसे हो सकते हैं हम कृष्णा से कनेक्ट, हाउ कैन वी बी कनेक्टेड विद कृष्णा। सो वन थिंग इज दैट वी हैव टू इंट्रोस्पेक्ट आवर सेल्स, वेयर डू वी स्टैंड,
where are we, and how we can move further. Huh? And then we have to try to make sure that whatever we are doing it for Krishna's pleasure and for Guru's pleasure. Be it business, be it college, be it any work. We have to make sure we are doing it for Guru and Krishna. Just like uh, just like Krishna instructed Arjun. What was that verse? माम अनुस्मर युद्ध च, कि मेरा स्मरण करके युद्ध करो ना। बहुत बार ऐसा सुनते हैं कि अगर वो बीट बैग लेके करता तो तब तक तो उसका सर ही उखड़ जाता है ना। कैसे वो स्मरण करता भगवान को, क्योंकि वो एक्टिव वो भगवान के लिए कर रहे थे। अर्जुन वॉज फाइटिंग द बैटल फील्ड फॉर कृष्णा। So if you ask him, why are you killing him? Because Krishna has instructed me for him. Why are you doing anything in the battlefield for Krishna? So whenever if anyone asks us, why are you doing this? Our only answer should be, not only answer, but actually in our heart, it should be that I am doing it for Krishna. This is how we can always be connected with Krishna in any and every circumstance in our life. And we should also keep on introspecting कि हम कहाँ पर हैं, किस स्तर पर हैं, और कितना भी दूर है, और कितना भी वर्क करना है इस क्वालिटी को अपने अंदर इम्बाइब करने के लिए। यस सान्या दीदी, यू आर सेइंग समथिंग। It's like envious is because of lack of knowledge, right? तो फिर ये भी बोला जाता है ना कि transformation comes through the realization. तो ये knowledge बस knowledge रह जाती है, we don't realize it. So what can we do that to realize it actually in our heart? So one thing that I have heard what we can do is, जैसे इच्छा रूप है, अब इच्छा से एटलीस्ट अभ्यास रूप पे तो आए, है ना। अभी तक तो सिर्फ इच्छा है कि हाँ आई नो आई वॉन्ट टू, बट जब क्लास खत्म हुई तो इट कैन गेट्स बैक टू नॉर्मल, जैसे था वैसा ही रह जाता है। तो वन थिंग विच वी कैन डू इज ट्राई टू कॉन्टम्पलेट कि वेयर एम आई स्टैंडिंग अभी, क्यों मुझे ये क्वालिटी अपने अंदर चाहिए, मैं क्या कर सकती हूँ इस क्वालिटी को अपने अंदर लाने के लिए, है ना। एंड देन वी ट्राई टू वर्क अपॉन दैट कॉन्शियसली, वी ट्राई टू वर्क अपॉन इट एवरी डे। वी आर हियरिंग समथिंग, जिससे अभी एक बार सुन लिया, बट व्हेन यू आर एवरी डे हियरिंग, एवरी डे वी आर कनेक्टेड, देन वी गेट दैट एनकरेजमेंट, हाँ मुझे करना है। जो मैंने सुना था, जैसे महाराज टेल्स, हमारा नोकिया का बैटरी है, बहुत जल्दी खत्म हो जाता है, बट इफ वी कीप ऑन चार्जिंग इट देन वील ऑलवेज स्टे बूस्टेड अप। तो हमेशा सुनते रहना है, सिर्फ सुनना नहीं, फिर कॉन्टम्पलेट करना है, क्यों मुझे चाहिए, मैं कहाँ पर हूँ रियली, मैं कहाँ पे, मुझे कैसे अपने इंट्रोस्पेक्ट करना है, देन ट्राई टू इम्प्लीमेंट दैट। For me, if I try to introspect and contemplate, so I get to this that I have to become more uh, quality of my chanting I have to improve, for example, because भक्ति करने से ही qualities आ सकती हैं, है ना। तो if I want to strengthen my nourish my bhakti, if I can think for me that I have to increase the quality, so क्या मैं उसके लिए practical steps ले सकती हूँ। Maybe I sleep early, then I wake up early, and then I hear what is the importance of chanting, and I dedicate time to my rounds. I hear every day, I read every day. So I'll have to then work upon that and keep patience कि वो फिर heart clean करेगा, determination and enthusiasm always, धीरे धीरे करके, and association is always the key, हमेशा association में रहने के लिए वो ही encourage कर सकते हैं ना कि करो करो, अपने आप से तो नहीं हो पाता, बट association में होता है। Yes. So, how can we be connected with Krishna? There is one small analogy कि जैसे जब दिवाली आती है तो जो घर की हाउस होल्ड मदर्स होती हैं वो तो साफ सफाई कर देती हैं, बट जो वर्किंग वुमेन होती है वो क्या करती है कि कोई गेस्ट आने वाला है तो सारा कचरा उठा के पीछे डाल दिया अभी के लिए, फिर वो आएंगे जाएंगे, फिर देखते हैं बाद में साफ सफाई करते रहेंगे, है ना। सपोज देयर वॉज अ डेड रैट इन द हाउस, नाउ दैट वुमेन पिक दैट डेड रैट एंड पुट इट इन द एटिक, क्या होगा, गेस्ट आएंगे चले जाएंगे, बट आफ्टर सम टाइम इट विल स्टार्ट स्टिंकिंग बैडली, इट विल स्टार्ट टू स्टिंक बैडली। सिमिलरली वी कैन ऑल्सो वेयर नाइस तिलक, है ना, वी कैन वेयर 3 राउंड कंठी माला,
We can wear good clothes, sarees, dhoti kurta, whatever. है ना? But if we don't try to treat these anarthas, if we don't try to imbibe these qualities, it will start to stink. Our consciousness will start to stink. है ना? And we'll not even know कि हमने वो dead rat कहाँ. Mind has many layers. हमें पता ही नहीं लगेगा कि हमने वो कहाँ पे फेंका, हमने वो अनर्था कहाँ कहाँ पर है वो. अच्छा, एंड हमसे ज्यादा दूसरे को पता लगेगा कि she is stinking of enviousness. Because when your stomach is upset, sometimes you don't realize that you are stinking. The next person realizes, oh, the stomach is upset. Similarly, we sometimes will not realize that we have enviousness, but the other person detects that this person is stinking of envy. So हम कहाँ उसको फेंक देंगे, कौन सी माइंड की लेयर में, हमें याद भी नहीं रहेगा. बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू क्लीन इट अप. है ना? वरना हम ही सोचेंगे कि मेरे को ऐसा क्यों लो फील हो रहा है, वाई इज माई कॉन्शियसनेस लाइक दिस, वाई एम आई फीलिंग सो लो. है ना? बिकॉज वी डोंट नो दीज अनर्थास. ना, सो वी इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी इम्बाइब दीज क्वालिटीज विच कृष्णा सेज. Then there is another question that how can we give up this envy now? सुन लिया कि अद्वेष्टा बनना है, एनवी लेकर हम कृष्ण के पास नहीं जा सकते. अब अगर एनवी को हटाना है तो what can we do to give up this envy? So I was hearing, you might think that it is strange, but if we become a mother, not literally, but what mother is, a mother is never critical about the child, is never judgmental about the child. A mother is always empathetic. Huh? So, for example, अगर एक लेक्चर हॉल में लेक्चर चल रहा है, वहां पर दूसरे लोग तो सोच सकते हैं कि क्या ये माँ, इसको इतना भी नहीं है, बच्चा शोर मचा रहा है, लेके जाए बाहर, पता नहीं कुछ करती नहीं है. बट माँ को क्या लगेगा, अरे ये तो बच्चे का स्वभाव है, मैं कब तक कंट्रोल कर सकती हूँ उसको. बट दूसरे तो क्या होंगे, अरे ये क्यों नहीं करती, दे विल बी क्रिटिकल. फॉर एग्जाम्पल, अगर एक बच्चे का नाक बह रहा है, वो लोग बोलेंगे हाय बेचारा जुकाम हो गया, नाक बह रहा है. या कोई ऐसा क्रिटिसाइज भी कर सकता है, इसकी माँ तो इस्कॉन से जुड़ गई है, पूरा टाइम लेक्चर सुनती है, बच्चे का ख्याल नहीं है. बट माँ को पता लगेगा, माँ क्या करेगी, ये ना वो सिंपथी दिखाएगी, ना वो क्रिटिकल होगी, ना वो जज करेगी, सीधा आएगी, उठाएगी, साफ करेगी और अंदर लेके जाएगी. है ना? This is what she will do. So if we imbibe this quality as a mother, then we'll not only be sympathetic कि होए इस devotee को ये हो गया है, we'll take action. We'll always take action how we can help other devotees. Because we know that they are part and parcel of Krishna. And they are anyone, be it devotee, be it anyone. Because a grateful heart does not think whom to be grateful for. It is grateful for everyone. Right? So just like a mother, this is their nature, that they'll always be in action. चाहे दूसरे बंदे का fault भी क्यों ना हो, चाहे हमारा enviousness justified भी क्यों ना हो, but still that devotee will be always in action. How? मतलब enviousness तो बहुत दूर की बात है, चाहे fault भी हो, we will think how we can help and make that devotee also, any person also more close. कैसे हम उस डिवोटी को कृष्णा के और क्लोज लेके जा सकते हैं. एनवियसनेस तो फिर दूर की बात है, इफ वी imbibe this quality as a mother. ना, so just like if you think that if my finger has a cut, I will not start to envy my finger. है ना? Why? Because the finger is the part of the body. Similarly, if anyone has a fault, I know that they're part and parcel of Krishna. How can I envy the other person? अगर, and even if the other person has a fault, and if we are the authority, then we can, जैसे अगर हाथ गंदे हो जाते तो हाथ को काट तो नहीं देते ना हम, हाथ गंदे हो जाते तो हम हाथ को धो देते हैं. सिमिलरली अगर हमें लग रहा है दूसरे बंदे में कोई फॉल्ट है एंड इट इज stopping their progress in Krishna consciousness, and only if we are the authority, then we will try to tell that person gently, will help that person, will not start to envy that person, will not cut him off. He is a parcel of Krishna, part of the movement, part of the family, and be it anyone.
meet anyone, then we think, how can we give Krishna to that person? And the major thing through which we can change anyone's heart is by changing our own heart. If we try to imbibe this quality inside of, not only this, but if we actually try to become genuine devotees, then that attracts others. जैसे आचरण से प्रचार करना, एक्चुअली वो actions always speak louder than words. So if we live this, कभी कभार आई थिंक कि फिलोसफी तो बहुत अवेलेबल हो जाती है, कृष्णा परम भगवान है, हमने 3 मोड से ऊपर उठना है, हमें करना है, फिर सब सुन के लगता है सब पता तो है, बट फिर भी नहीं मन करता कुछ करने का, कुछ ऐसा. I personally feel what is lacking is living examples. If I have a living example in front of me कि मेरे एज का जन भी ऐसा हो सकता है, then it inspires me. मैं क्यों नहीं हो सकती? तभी चैतन्य महाप्रभु बाल भक्तों के इतना पढ़ते थे ना, ध्रुव महाराज and प्रहलाद महाराज, so inspirational. So inspirational. So, living examples. If we can become a living example by imbibing these qualities, so not only for us, this movement, but for everyone, we can set such good example. हमें देखकर ही लोग भक्ति करने, चाहे कोई chanting करता ना हो, चाहे मन भी ना करता हो उसका, चाहे वो inquisitive भी ना हो, बट आपको देख के वो inquisitive हो जाएगा कि आप ऐसा क्या करते हो कि आप you are so, these qualities are there in you. Then you can tell, oh, I just chant and it's the magic of chanting. You also try to have it. And so, अच्छा चलो दे दो, देखते हैं कुछ होएगा या. So this is the good way that we can preach also, है ना? So although it seems it is difficult, but Krishna could say that give 1 lakh donation every month and come to Golok Vrindavan. Then we maybe could have worked hard and tried to earn that much money. Or Krishna would have said that chant 30 rounds every day and come to me. Then also we would somehow have still managed, or do this yagya and then come to me. No, it's not that easy. All he wants from us that we become his dear devotee. Na adveshta sarvabhutanam. Sarvabhutanam is also very important here. Not only advesh towards devotees कि चलो हाँ डिवोटी है तो मैं एनवियस नहीं होऊंगा बाकी सबसे, सर्वभूतानाम, बिकॉज एवरीवन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ कृष्णा, सबके हृदय में भगवान है, तो सर्वभूतानाम, किसी के प्रति, एक्चुअली बिकॉज आई हैड हर्ड दिस फ्रॉम राधानाथ स्वामी महाराज कि अगर किसी का हार्ट का क्वालिटी ऐसा है तो वो कैसे डिफरेंशिएट कर सकता है कि मैं इसके प्रति तो ग्रेटफुल हूंगा बट इसके प्रति ग्रेटफुल नहीं हूंगा, है ना? सो इफ ही इज एक्चुअली अद्वेष्टा, he'll be अद्वेष्टा फॉर बिकॉज उसका हार्ट ही ऐसा है, उसका हार्ट का डेप्थ ही इतना है, तो he'll be अद्वेष्टा towards everyone, है ना? So this is non-enviousness. If we become rich in Krishna's love, then other things will not bother us. It sounds difficult, but then we are trying to become dear of a VVVIP person. So it's not that easy, but then we have to work together. इसलिए ही महाराज ने बोला है, especially I need all of your association. I am lacking these qualities like anything. So maybe in your association, बार बार सुन सुन के सुन. Maharaj has said, in every class you take this Bhaktastakam. So I have to hear one class several times because he knows that really kut ke envy is there inside. So somehow or other, this, if in your association this unearth can get aside its greatest benediction in this life or lifetimes to come. So thank you so much for joining. One small thing also I wanted to say कि there is मतलब I try to take some small quizzes also as one quality ends. So I take one small quiz of 10 MCQs in the next class. And as one shloka ends, then there is an examination of 30. सॉरी टू डिस्टर्ब वृंदा, गोपी Yes, का yes. कॉल बोल रही है, मैं तब से वेटिंग रूम में हूँ, कोई मुझे अलाउ नहीं कर रहा. सॉरी अभी देखा. कौन बोल रहा था? गोपी ना? गोपी गोपी, हाँ, शी इज हियर, यस.
So I was saying कि जब वन श्लोक खत्म हो जाता है तो 30 to 40 मार्क्स का एक एग्जामिनेशन होता है, और आफ्टर एवरी क्वालिटी एंड्स तो एक 10 मार्क्स का एमसीक्यू होता है. सो प्लीज बी रेडी फॉर दैट 10 मार्क्स एमसीक्यू इन द नेक्स्ट क्लास. एंड एज द श्लोका एंड्स देन विल डू द एग्जामिनेशन. इसका रिजल्ट हम महाराज को भेजेंगे. यस राम प्रभु जी. Thank you so much for such a wonderful class. मेरे लिए बहुत सारे points नए थे and it was very nice. You're well prepared and wonderful. We are very grateful to you. Thank you so much. Also, can we please read Canto 9, Chapter 11, text number 23? It is related with your class. It will take 2 minutes. 9 प्रभु जी. 9.11.23. Yes. And 7:15:23 also devotees can read in their home. Yes, it is very well. You took just 2 words. It is very nice. Now, how we take the shlokas, we take Sanskrit, then Prabhupada lecture, Prabhupada purport. So it is very nice. You take your time, but be like this. You go deep, deep, deep in one word and take it, then connect it, and then it would be great. Yes. Yearly tell this shloka. Yes, so Sanya Didi, you can read the shlok. पुरुषो रामचरितं सर्वान् वेद उपाध्रयन् अनराम अनराशंस्य परो राजन् कर्मबन्धैर्विमुच्यते. Yes, आप ये भी पढ़ दो synonyms. Purusha, that is any person. Ramacharitam, the narration concerning the activities of the Supreme Personality of Godhead, Lord Ramachandra. Sarvanai, by oral reception. Upadhrayan, simply by the process of hearing. Anaramshya para, becomes completely free from the envy. Rajan, O King Parikshit. Karma bandha, by the bondage of fruitive activities. Vimuchyate, one becomes liberated. Yes, thank you. Arav Ruji, you can read the translation. O King Parikshit, anyone who orally receives the narrations concerning the characteristics of Lord Ramachandra's pastimes will ultimately be freed from the disease of envy and thus be liberated from the bondage of fruitive activities. Thank you. Shakti. Purport. It's fine. Okay. Devotees can read in home. Yes, I was just telling कि आपने ये जो purport पढ़ा था, he is a completely perfect mystic because he is fixed in the instructions received from the spiritual master, and because his senses are controlled, he is determined. तो this is the reason कि मतलब जब कोई गुरु के प्रति जो है शरणागत है, तो क्या है उनकी इंस्ट्रक्शन में तो he becomes completely perfect mystic. तो क्या है वही जो है परफेक्ट व्यक्ति बन जाता है. यहाँ पर कह रहे हैं कि अगर कोई हरि कथा का श्रवण कर रहा है, जैसे आप कह रहे थे, तो उससे मुझे जो है कि डेली 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 जब हम श्रवण कर रहे हैं तो निश्चित रूप से ये अद्वेष्टा, ये श्रवण से जो है ये भगवान राम का चरित्र, हरि का चरित्र, तत्व, महाराज कहते हैं मेरा एक क्लास, प्रभुपाद का एक क्लास, तो ऐसे जब हम क्लासेस सुनते रहेंगे रिपीटेड मूड से, देन यू वर सेइंग, हालांकि मैं तो ये नहीं कर पाता हूँ ढंग से, कि कंटेम्पलेशन, और फिर आपने 4 चीजें भी बताई बहुत अच्छे से, कि एक इच्छा है, अभ्यास है, सिद्धि है, और फिर क्या था, स्थिर हो जाता है व्यक्ति, ये स्थिर. तो कम से कम कंटेम्पलेशन से, अभ्यास से आएगा. और एक जो है ये हियरिंग कैसे हम कर पाएंगे, ये हियरिंग से नॉन एनवियसनेस आएगा, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज आपने रूट बताया वो यहीं से कटेगा. और हियरिंग कैसे होगा, शुशुषो श्रद्धानस्य वासुदेव कथा रुचि स्यान महत सेवया विप्र पुण्य तीर्थ निवेश निषेवना, जो कि पुण्य तीर्थ हैं, जिनके हृदय में कोई कलमश नहीं है, जो स्यान महत सेवया, उन महात्माओं की सेवा करने से, शुशुषो श्रद्धानस्य वासुदेव, वासुदेव कथा रुचि, ऐसे ही कथा में रुचि जो है डेवलप होगी. विदाउट सर्विंग वैष्णवस, विदाउट गेटिंग अटैच्ड टू देम, हम जब तक प्रभुपाद से, अपने गुरु से, अपने गुरुजनों से, इन वैष्णवों से अटैच्ड नहीं होंगे, जैसे आप कह रहे थे, डोंट जस्ट हियर, टेक एक्शन. अगर वो आपके हाथ में है कि सिंपैथी नहीं दिखाना, जस्ट टेक एक्शन. और एक और चीज थी, मैंने प्रभुपाद के लेक्चर में सुनी थी, प्रभुपाद सेज लाइक द जीलस, कि जो जेलसी है वो हमेशा उनसे होती है जो हमसे ऊपर है, कि इसके पास ये है या वो है. और जो
एनवियसनेस है वो हमेशा बराबर, मोस्टली क्या होगा, ये जो समान हम आपस में है यहाँ पर एनवी, कि ये तो अच्छे से कर पा रहा है तो मैं क्यों नहीं कर सकता है, कर सकती, वो तो कर, हम बजाय खुश होने के, जैसे राधानाथ महाराज कहते हैं कि विदाउट बीइंग ग्रेटफुल टू द एसोसिएशन वी स्टार्ट बिकम एनवियस। तो दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि इक्वल्स में बहुत ज्यादा रहती है, सो हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर कोई भक्ति में आगे बढ़ रहा है, हमें नहीं सोचना चाहिए मटेरियल वर्ल्ड की क्वालिटी है तो हमें लगता है कि एक जगह में एनवियस हो गया क्योंकि वो कर लेगा तो मैं नहीं करूंगा, परंतु गोलोक में ऐसा नहीं है। जो करेगा हम उसे अप्रिशिएट करेंगे, कृष्णा हमसे ज्यादा प्लीज हो जाएंगे। जैसे आपने कहा कि अभ्यास करने वालों से गुरु महाराज ने बोला ज्यादा प्लीज होते हैं। सिमिलरली, इफ समवन इज डूइंग नाइस, इफ वृंदा इज डूइंग नाइस, शी इज डूइंग नाइसर देन मी, देन आई एम हैप्पी। If Janva is doing nice, if you all are doing nice, then we should be happy कि हाँ ये अच्छे से सर्व कर पा रहे हैं. We should assist them. That's how enviousness will go. When we serve them, we start hearing. और प्रहलाद महाराज यही कह रहे हैं 7.15.23 में कि दम ऐसे जाता है वैष्णव की सेवा से, फिर सेंस ग्रेटिफिकेशन कि मैं ऐसा कर लूं, मैं वैसा कर लूं, उससे क्या है, ये रोकने से क्या चली जाती है, एनवी. So this is very nice. अद्वेष्टा, और जब तक अद्वेष्टा नहीं है, कृष्णा will never like us. So this is the Rukas. Thank you so much for the wonderful class. This was my 1 2 minute edition. Thank you so much. Hare Krishna. Thank you so much, Prabhuji, for telling us so wonderfully. Always grateful. Anyone else wants to share anything? निपुण प्रभुजी, जानवी, सची, गोपी. हरे कृष्णा। नेक्स्ट टाइम से प्लीज कोई ध्यान रखना कि कोई बाहर अगर अटका हो तो उसे अंदर कर देना। अगली बार से मैं सान्या दीदी को भी को होस्ट बना दूंगी। एक्चुअली मैं बीच में लीव हो गया था और उसके बाद मैं कम से कम आधे घंटे से वेट कर रही हूँ कि कोई मुझे अंदर कर दे, अंदर कर दे। मैं वापस लीव करती हूँ, फिर ज्वाइन करती हूँ कि आपको नोटिफिकेशन आएगी, बट आज पता मेरा सौभाग्य नहीं था। नहीं, बट सॉरी, आई मिस्ड अ लॉट ऑफ नेक्टर टुडे। no, not nectar, it's just. Dear Maharaj. हरे कृष्णा वृंदा दीदी, आज की क्लास सच्ची वो सो नाइस एंड आई डिडंट नो दैट आई नीडेड इट सो मच। मतलब आज ये सुन के ऐसे मतलब रियलाइज हो रहा है कि हाँ कितना इन अनर्थों से फाइट करने की जरूरत है, कितना उनको एक्चुअली अपने हार्ट से निकालने की जरूरत है, कितनी एनवी कूट कूट के भरी है ये भी a quick reminder. So it was truly very beautifully explained by you. So thank you. I'm really eager to hear आगे क्या आप बताओगे, मतलब Thank you. very interesting. It is your magnanimity because you want to progress in Krishna consciousness and Yeah. you're taking it like. It is your mercy that you are actually telling us about it. पता ही नहीं था. Thank you. Thank you. Yes, But you Sanya. take like this one word, एक word करके, go deep, purports and everything. Then you go like this, please. ऐसे तेजी में नहीं. Take one word and explain it nicely like you did. Yes. Sanya Didi. थैंक यू सो मच फॉर द क्लास, स्पेशली द पॉइंट कि व्हेन यू सेड ना कि हमें हर चीज का एज अ समझना चाहिए कि भगवान की ब्लेसिंग आ रही है, कि कुछ भी हो रहा है तो इट इज हेल्पफुल फॉर मी ओनली कि मैं भक्ति में स्ट्रांग बन पाऊं। जैसे यू गेव द एग्जांपल ऑफ लवन्या माता जी, वी ऑल हैव सीन हर, इट इज रियली गुड पॉइंट। थैंक यू। Thank you so much. Please bless me that I can also imbibe something, not just like a parrot repeat. Thank you so much, everyone, for joining. We'll meet each other on Wednesday. Gopi, when are you planning? Wednesday or next week? वेडनेसडे इज हरिप्रिया जानवी's day, right? Her day is Friday. Okay, I will text. ठीक है. So she will. Vrinda Didi, Hare Krishna. If Gopi Priya cannot take tomorrow, then I can try. Oh, sorry, day after. अगर Wednesday को नहीं ले सकती तो फिर I can try to substitute. And also a quick announcement for all of you कि कल से महाराज जी की गीता टॉक again will start at 7 to 8 p.m. तो आप सब आ सकते हो. We're very fortunate. So Thank yes, 7 to 8 p.m. till what date, Janvi? till I think till 22nd or 21st. I'm not sure. Okay. 21st, yes. Thank you so much, everyone. Hare Krishna. Hare Krishna. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च
पतितनां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णवी की जय। जगत गुरु श्री प्रभुपाद की जय।